Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. I hope you all are doing well, especially those who are preparing for IBPS SO Law Officer examination. उनके लिए मैंने एक recently video series start की है and इस video series के सारे videos को देखने के लिए don't forget to subscribe to Legal Bee, that is the exclusive law channel of iExamB. बाकी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम सिविल प्रोसीजर कोड। सो बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कोई भी क्वेरीज हो रीच आउट टू अस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एंड एम्ब्रेस द iExamB लर्निंग एक्सपीरियंस। IBPS SO Law Officer एग्जामिनेशन के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी क्रूशियल टाइम है। सो इट इज़ फॉर देम टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट नाउ। सब कुछ डिटेल में पढ़ने का टाइम अब उनके पास नहीं है। सो फोकस, स्ट्रैटेजाइज ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज. Code of Civil Procedure is one of the important topics. So we are going to select and discuss most important questions from CPC. The first question, which section of CPC provides for modes of execution of decree? Modes of execution of decree काफ़ी important area है. Section तो आपको पता ही होना चाहिए and इससे related सारे modes के बारे में आपको basic conceptual clarity होना बहुत ज़रूरी है. So which is the section that is dealing with modes of execution of decree? That is B, section 51. Powers of court to enforce execution. उसमें सारे ही modes covered हैं. Delivery of property, attachment and sale or by sale without attachment of property, arrest and detention in prison, appointing a receiver, in such other manner as the nature of the relief granted may require. यानी कि in such other manner में काफ़ी सारे other modes भी आ सकते हैं. It can be a combination as well. Precept is defined under which section of CPC? Precept भी एक important topic है. मैंने यहाँ पे सेक्शन ज़रूर लिए हैं, भले ही सेक्शन नंबर्स कम पूछे जाते हैं IBPS एग्जाम में, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर और कंसेप्ट याद होता है तो ये इससे बेटर रिवीजन और प्रैक्टिस आपके लिए क्या हो सकता है. प्रिसेप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया. इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए. Do note down the section. Section 46 defines precepts. Precept is an order that is issued by a written order by one court to another. Decree holder इसको application करता है and the court which has passed the decree may whenever it thinks fit issue a precept to another court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to JD and as specified in the precept. Civil court has the power to issue commissions for what purpose? What is the object or purpose of commissions? Local investigation, scientific, perform any ministerial act, A and B, A, B and C. Commissions CPC में issue होते हैं, ये सबको पता है, बट ये commissions का basic objective क्या होता है? The answer is very easy. You can easily find it out from the options itself. अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तो इस सारे ही पर्पसेस के लिए कमीशंस इशू होते हैं. सो ये बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी कमीशंस क्या होते हैं, किस तरीके से इशू होते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है. दिस इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज पार्ट एज वेल. सेक्शन 75, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस. कमीशंस क्यों कोर्ट इशू करता है? बिकॉज कोर्ट खुद वो पोजीशन में जा नहीं सकता. कोर्ट इशूज कमीशन. ये कोर्ट के लिए रिसर्च कर कर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में आके सबमिट करते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर. ये सारे उसमें ऑप्शंस कवर्ड हैं. इन केस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ही शैल बी एग्जेम्प्टेड from personal appearance if the court is satisfied, and the suit is instituted for an act done in his official capacity, from arrest only and not from personal appearance, from arrest and personal appearance in all the cases. क्या पब्लिक सर्वेंट को कोई बेनिफिट मिलता है? पहले तो हमें ये देखना है कि क्या उन्हें कोई एग्जेम्पशन मिलता है. अगर मिलता है तो दे हैव गिवन वेरी कीन ऑप्शंस ओवर हियर. Somewhere it is given personal appearance, somewhere it is given a combination of arrest and personal appearance, या फिर उसको एक को डिलीट कर दिया गया है. So correct answer is C, from personal appearance if the court is satisfied and the suit is instituted for an act done in his official capacity. अगर official capacity में तो ही, अगर कोई personal capacity में कोई उसने act किया है तो फिर उसके लिए उसको public servant होने का exemption नहीं मिलेगा. This is a very important thing which you have to remember. Exemption from arrest and personal appearance, section 81. Can a decree be transferred to another court for execution? Very, very important section this is. Can we transfer it? Yes, no, yes in some cases, yes if the decree holder makes an application in that respect. A decree cannot be transferred unless there exist strong grounds of obstruction by judgment debtor. ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है एग्जीक्यूशन के, लेकिन कई बार हम ये ऑप्शंस देख के ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट नॉट दैट हैपन विद यू.
दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू पिक अप डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम डाइवर्स एरियाज। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ही हमने इसलिए स्टार्ट की है ताकि आपको लास्ट मिनट क्रूशल टाइम पे समझ में आए दैट विच एरियाज आर इम्पॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चंस देख के भी आपको समझ में आता है दैट आर यू एबल टू सॉल्व देम और नॉट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाता है। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड चेक योरसेल्फ। इन पीपीटीज को डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। Answer is D. Yes, if the decree holder makes an application in that respect, it can be transferred. Transfer of decree, section 39. When did the CPC come into force? बहुत ही basic question है, लेकिन ये क्यों पूछना ज़रूरी था? Because the year changes over year. It has come into force on 1st January 1909, but the year has changed. So it was drafted in 1908, तो हम 1908 लिखते हैं, but वो enforce कब हुआ? 1st January 1909. Which of the following is not true about a decree? Decree is a very important concept from CPC, and the definition of decree is really important. Decree, order, judgment. ये तीनों ही concepts बहुत important है. The difference between these three concepts is also really important. So I would suggest all of you to go through it in the best possible manner. कोई भी doubts हो, do reach out to us. It conclusively determines the right of parties. Formal expression of adjudication can be preliminary and final, but not partly preliminary and partly final. Defined in section 2.2 of CPC, rejection of plaint is a type of decree. तो इसमें से not true क्या है पूछा गया है, focus on that. Correct option is C. Decree की पूरी definition आपको यहाँ पे दिख रही है, and partly preliminary, partly decree, partly final decree हो सकती है, it may be, but पिछले option में क्या दिया था, that it cannot be. That's why this is the false option, or this is the not true one. Suit to which right to property or office is contested is a suit of civil nature, even if it is dependent upon a religious rite or ceremony. It's a suit of civil nature only when it is not dependent. It is dependent whether it is dependent upon religious rite or ceremony in another suit. If it is dependent upon religious rite or ceremony in another suit. Simple question है, an important concept है. Right to property or office के बारे में अगर हम बात करें, this should be very clear to everybody. Option A is correct. Section 9 talks about it. Jurisdiction of civil court, an important concept. Res judicata is incorporated under which provision of CPC? डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क सेक्शन है CPC का, सो एवरीबडी शुड नो अबाउट इट. रेस जुडिकेटा एज वेल एज रेस सब जुडिस, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. रेस जुडिकेटा सेक्शन 11, रेस सब जुडिस सेक्शन 10. Don't confuse between both are important. No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been already tried or already decided by the matter. अगर already decided है तो वो res judicata के कैटेगरी में जाके बार हो जाता है. Section 13 of CPC provides that a foreign judgment shall be conclusive, not be conclusive in certain situations, be conclusive except in 6 conditions is provided, be conclusive only in 6 conditions as provided. यानी कि 6 कंडीशंस उस सेक्शन में या प्रोविजन में प्रोवाइड की गई होगी उस हिसाब से. तो फॉरेन जजमेंट पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. बी क्लियर विद द क्वेश्चन सेक्शंस रिलेटिंग टू इट. व्हेन फॉरेन जजमेंट्स आर नॉट कंक्लूसिव, अगर वो उन कैटेगरीज में नहीं आता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, बी कंक्लूसिव. मतलब जनरल रूल में वो कंक्लूसिव रहेगा. एक्सेप्शंस क्या है? देयर आर 6 कंडीशंस विच आर द एक्सेप्शंस टू इट. Section 14 of CPC provides for presumption as to jurisdiction of court passing foreign judgment, genuineness of copy of foreign judgment, genuineness of certified copy of foreign judgment, jurisdiction of court passing foreign judgment, and it has been passed on merits, jurisdiction of court passing foreign judgment if the certified copy of judgment is produced. So presumption किसके लिए provide करता है Section 14? Foreign judgment की किस aspect के लिए? Answer is E. Jurisdiction of court which is passing the foreign judgment, कि उस कोर्ट को jurisdiction था, and when this presumption will be applicable if the certified copy of that foreign judgment is produced. Section 14, 13, 14 both are important. Executing court shall certify execution of decree to principal district judge of competent jurisdiction, court which has passed the decree, collector in the form of precept, civil judge senior division in the form of a precept. So the executing court shall certify execution of decree to, option C is correct, court which has passed the decree, उसको executing court certify करेगा the execution. Which is the provision for this? Not very commonly discussed one, that's why you may skip this, but it is important.
एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, सो ये इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 41, रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड टू whom, टू द कोर्ट विच हैज पास्ड द डिक्री. और अगर वो सेम ही कोर्ट है तो सेम ही कोर्ट को होगा. Which section of CPC provides for questions to be determined by a court executing a decree? This is also very important part. अगर हम execution की बात करें, we have to know about this power of executing court. Whatever disputes are arising while in the process of execution, those questions will be determined by the court which is executing the decree, and they will not go back to the court which has passed the decree. Which section is dealing with this? Answer C, section 47. Do go through the section. It is very important. If the judgment debtor dies, decree shall stand abated. It shall be executed against receivers of judgment debtor's property, या legal representatives के against होगा, or else the DH will make an application to the court for execution of decree against LR. Automatically होगा या वो application करेंगे. C and D are very interesting options. Decree is executed from property of judgment debtor. So what will be the effect of a death of judgment debtor on the decree? Very interesting question. Please keep a record of all these questions. They are very valuable questions. Do practice it. They are covering various concepts from CPC. Answer D. Decree holder shall make an application to the court for execution of decree against LRs of judgment debtor. Section 50 talks about the legal representatives. If obstruction is caused by JD while possession of property is delivered to the decree holder or purchaser of property, court may order detention of judgment debtor at the instance of purchaser, judgment debtor, decree holder, purchaser, decree holder, judgment debtor. ये क्वेश्चन एक्चुअली सेबी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो उसी तरीके का क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आपके लिए भी रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन से लिया गया है. करेक्ट ऑप्शन इज डी, decree holder or purchaser. At their instance only this is going to happen, if they are going to resist the process of execution. सेम क्वेश्चन अगर कोई सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है फॉर द सस्टेनेंस और सब्सिस्टेंस अलाउंस एज वेल, जो सिविल प्रिजन का कंसेप्ट है, दैट हैज टू बी बोर्न बाय द डिक्री होल्डर. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज. व्हाट इज द नोटिस पीरियड गिवन टू गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 80 ऑफ CPC? 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, 1 month. वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर पता है तो बहुत इजीली आप विद इन सम सेकेंड्स इसको सॉल्व करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में. A, 2 months period is given. Section 80, very famous provision this is. For the purpose of examination of a person, a court can issue a commission to another court in another state where the person is to be examined residing, another court where the person to be examined resides except high court. हाई कोर्ट को नहीं किया जा सकता, ऐसा एक्सेप्शंस में दिया है. Another court in another state where the person is to be examined, lower court in another state where the person to be examined resides. So ये कमीशन से रिलेटेड ही है, बट ये किसको इशू किया जा सकता है अगर वो अनदर स्टेट में है तो. दैट इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, अनदर कोर्ट इन अनदर स्टेट व्हेन द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड रिसाइड्स एक्सेप्ट अ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट को नहीं किया जा सकता. Section 76 talks about this, not being a high court, as you can see it. If the suit was not instituted in proper court, plaint can be rejected, plaint can be returned with endorsement, plaint shall be returned to appellate court for forwarding it. Shall be, can be, ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए. Shall be returned to proper court with endorsement and reasons recorded. Shall be rejected for lack of jurisdiction. Civil case है. So is it binding on them that they will reject it or they will send it back, or what will be the procedure? Answer is D, plaint shall be returned to the proper court with endorsement and reasons recorded. ये उसका सबसे बेस्ट आंसर है. डायरेक्टली रिटर्न ऑफ प्लेंट से लिया है ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ CPC. Which of the following property is not liable to attachment and sale in an execution of decree? These are the options. Which is not liable to attachment has been asked. Please focus on that. Rest are all attachable. Only one option is the one which is not attachable. Very important provision from execution. Section 60 of CPC. Books of accounts are not liable for attachment. कोई भी चीज़ें जो आपको डेली में अर्निंग्स के लिए लग सकती है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर देयर of a person who is an agriculturalist, they will not attach that. These are the basic things which are required for their living and for their earning, so that will not be attachable. Do go through section 60. It gives you a big list of the things which can be attached and not attached, so it is very important. If a question comes, you have to go for it. And ये simple logic अगर आप apply करेंगे आपको याद रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया.
Executing court shall certify execution of decree to principal district judge of competent jurisdiction, court which passed the decree, collector in the form of precept, civil judge senior division in the form of a precept. Correct answer for this is section 41 talks about it. Actually ये question आया है दोबारा से, but I will try to by mistake this has been repeated, but yes, it is an important one. So if you have any queries, you can reach out to us. Thank you everybody for watching the video. We are there to help you with any queries, with any requirement of any information. Do reach out to us and prepare 50% faster with us at our exam.